Gurukul system was a idea of education. Many of the ancient scholars say that. What happens in homeschooling, only the elite can give education to their children. I can afford homeschooling, you can afford homeschooling, the rich can afford a teacher to the home. Yes. So what about the poor? He's sending his kid to the government school where the kid is, the education is free of cost. Free of cost. So what will you do there? So we as a society should consider all these poor and rich, everyone, right? Yes. So there will be a question of equality. That's what I am saying. Okay. In 1964, when Kothari Commission said that we have to spend 6% of the GDP in education sector. That means you have to hire more teachers, you have to give infrastructure, all the lot of issues with this education system. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Muse Talks, the show where I am your host, Mohammed Hayan. Today we have with us our distinguished guest speaker, Dr. Thouseef Madikeri, who is a distinguished scholar and a founding director of Center for Educational Research and Training. He has a PhD in biotechnology and he brings a unique blend of expertise in the fields of biofuels, educational policy and administration. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. There were times which coming back to our ancient Indian civilization where Gurukul system was a idea of education. Many of the ancient scholars say that. Yeah, I got it. They see homeschooling, it's not possible in India. It's because, okay, it can be possible because our population, majority of our population is into labor market. Most of them are working in a labor workforce. So it's not possible in India because see, if what happens in homeschooling, only the elite can give education to their children who have time and who are well educated, who have already gone through the education system. They can teach these kids at home. But it's not possible to these migrant families, labor class society, because both husband and wife both are working from morning to evening. How can they give time to their children? And they are not even they're into the education. Most of population is kind of illiterate population in India we have. So it's not possible in India homeschooling. Okay, homeschooling we have lots of advantages in homeschooling, but it's not possible to educate all whole community in a system called homeschooling in India. That is the problem. So there will be a same equity question at last. So we don't get a quality education even in homeschooling. Okay, elite can get the quality education, but the system, the question we have to raise about the quality of education in our schools, whether it is a private education or a public sector. See, the problem is today we don't have quality education in our government schools or in private schools. So what we are thinking, we are saying that okay, the elite they're coming and they're saying that okay, we'll provide schooling in our home to our kids. So the problem is with the quality of education, the system. Problem is in the system. So we have to address the system. Unless you address the system, it's not a solution. It's not an alternative. Homeschooling is not an alternative. Only for the it's an alternative for the elite class, rich, not for the poor. Or they might invite any gurus or scholars. Can that happen to their homes or? No, that can happen. That's not a problem. Homeschooling, I can afford homeschooling. You can afford homeschooling. The rich can afford a teacher to the home. Yes. So what about the poor? He's sending his kid to the government school where the kid is, the education is free of cost. Free of cost. So what will you do there? So we as a society should consider all these poor and rich, everyone, right? Yes. So there will be a question of equality. That's what I am saying. Okay. So the common school system, what the ideologues they are promoting, we have to give common school, we have to bring common school system in India. That means the quality of education should be equal for each and everyone, for the poor and rich. So in homeschooling, I can give very good education, very good quality of education to my child. Yes. You can give very good quality of education to your child. All the rich can give good quality of education to their child. But what about the poor? So there won't be a
equity question, that will be a question mark. So this will largely affect the marginalized. Yes, marginalized and downtrodden communities. That's why the homeschooling, it's a concept of elite. It's a concept of elite. And it will be a beneficial to for elite itself. Because in Indian society, you cannot bring homeschooling to the system. It's very difficult. The idea is itself. See, homeschooling is for each and every parent. Okay, parenting is a concept in educating. Not about that schooling. What I am saying, schooling is different. Educating is different. Education is a different. Schooling is a small concept. The schooling, it's a system that. Okay, education is the real idea behind the schooling, right? The basic moral values are taught by the parents. Okay, so it's commonly each and every parent will teach the child about the values and all this. From a child will learn from their home itself all these things. So, but what happens if you are into an education or in a proper schooling system? The quality will be a question, because most of these people, they cannot give time to the child in India. Because majority of the population is working as a labor force. That's what I am saying. The quality will be compromised. Quality will be compromised with the poor. With the poor. Not with the rich. So now that you have come to the equity concerns of the poor people, India is a country. India is vast. India consists of different religions, different caste, different creed. The people have different ideas. So with all these factors, how can education system be working in a plural society like India? See, for example, if you want to do teach religious teachings, so you can do it at your home. That's not a problem. Religious teachings, whatever. But in India, apart from this religious education, the education itself is in peril. That is the problem in India. So we want to raise the system here. We have to raise the questions of the system, and we have to improve the quality of education in India. Yes. See, in 1964, when Kothari Commission said that we have to spend 6% of the GDP in education sector. That means you have to hire more teachers, you have to give infrastructure, all these lot of issues with this education system. In 1964, even in 24, we are in 2024, we are saying that we need 6% of education in GDP in education. You have to spend 6% of GDP in 2024. Even today we are spending around 4%. Okay. But we are raising 6%. Even our vision is only 6%, even today. See, the 1964 he said we need 6%. In 24 also we are asking for 6%. So we don't have that approximate calculation. So how much, what should be the budget of education, and how much the government should spend on education. Globally, even in major countries, what happens is they contribute their major budgets on the defense sectors, but that budget will be not concentrating on education system, where there will be the education system can be free, or education can be free to the marginalized sections. That itself is a concerning part. Won't you agree? Yes. See, defense in India, Pakistan, Saudi Arabia, India, we are buying weapons from all these countries, US, Germany and all. Russia. Yes. So we are the largest buyer. Then Saudi Arabia and all this. We come into that category. Even Pakistan come into that category. We are the buyers of these arms. See, so this is actually, it will go into a different topic if I start with that, because these all these terrorism concept is all related with the economic sector, because these large countries, these developed countries, they sell arms into these countries, and they create that conflict areas, war conflict areas, and they sell arms into these countries. Okay, we are spending around 15% of the budget. Yes. To defense sector. Even Pakistan is spending way more than that. Yes, both are spending. We are buying it from those developed countries and we are selling it. We are not producing anything in India. See,
we need to spend it on education and the health sector. This is most important sector. Oh, if you go into that topic, and that will be a different another discussion, and that will take time. So can local community people, because there are schools nearby, and if those local community people, can they contribute to the education where they can teach? If, for example, if there is a fisher community in my area, can this fisher community help in educating children about the fishing, the idea of fishing? Yeah, sure, absolutely. See, community participation is very important in education. Even the parents should also go to school. What I am saying is, in my concept of education, even in India, what happened during COVID? During COVID, government said everyone let them teach through online. Online. So what happened? The parents, they were not able to use the mobile system, how to connect to online classes and all this. This was the problem, because we were technologically literate. Okay, they may have degrees and all, but they were technologically literate. Lot of Indians. Okay. So that is one concept. Even if you generally also we have a lot of illiterates in India. They were not gone to school, or they not kind of that. I don't use illiterate word, but generally in a system you should use that word. Okay, the problem was that they were not able to use all these things, all these electronic gadgets. So what I am saying is, in a school, if my kids are studying in a school, I and my wife should go to that school, at least 1 or 2 classes for parents. Every school should conduct 1 or 2 classes in a week for parents. That may be a different level of class. For some parents it may be of technology classes, it may be of some other topics, other subjects. Maybe for some parents it may be of basics. Let them learn from ABCD, from numerical 0. Let them, for some parents. So according to their potentials, according to the potentials of the parents, they should divide the classes. So every week there should be at least 2 classes for parents, and all the parents should attend the school. The schooling is also compulsory for parent, as it is compulsory for the kids. Yes. So there should be a system like that in India, so that what will happen, parents will think that they are also part of the school, and they will also contribute. Like some parents, that they will say that we will contribute. I have some knowledge of technology, I will teach this to these kids. I have some knowledge about fishery, and I will teach this to kids. That itself will have a that will be a community participation. What will happen if this is the system? What will happen? So you see the result of this. So what will happen? Every parent will visit the school, whether it is a government school or whether it is a private school. So they will visit the government school, and when a parent visits the government school, all these teachers, principals, all they will be alert. Okay, and automatically your school will improve. The infrastructure will improve, because when a parent visits the school, if there is a problem, all these parents will complain to the authorities, government authorities. If it is a government school, they will complain to the authority. If it is a private school also, they will complain to the authorities. So automatically the system will improve. In a sense, so the whole education system will improve. So they should be made ideal in India. It's very important, very important. If any of the MPs are seeing this video, they might. They should discuss. Everyone should take participation in this discussion. I mean, in the education. So what happens? Even nobody talks about education sector. It is very, very less discussed topic. Because what happens if I discuss today, even if you see my discussion 10 years before discussion, there will be a same discussion, because the system is same problem, same issues with the education system. And no changes. See, that's what I said, 6% is of 1964. Even today political parties are saying that they are demanding for 6%. And that opposition parties are demanding for 6%, government is saying that we will do that. That should have raised to 10%, I guess. If there is no approximate calculation. If you are comparing it to 1964, then yes. Macaulay, I'm quoting Macaulay. Macaulay is an English poet. He was a Whig politician in British Empire. He used to say that he wanted to create a pool of Indians where people would serve British, and they would
what would happen is Indian, what he quotes is Indian would be inbred, Indian in blood and color, but English in taste, in opinions and morals and intellect. See, the whole idea of Macaulay was, it is like a what we know, or the quoted thing is about the clerical system, clerks and all. See, the problem is, it was not his idea. The actual idea was, Thomas Macaulay's idea was to stop innovation and manufacturing system in India. They wanted to stop all these things in India, and they wanted to send all these raw materials from India into the European Industrial Revolution. That is what this English education policy by Thomas Macaulay in 1835 is. So this was the thing. They wanted to stop all these things in India. So they wanted to send this to raw materials to Europe, Industrial Revolution, and from there they wanted to sell it back to India. So it was a huge market. That is, you should always think in that economy, everything is related to economy, even your educational policies, because everything is commercialized. They wanted to send the raw materials to Europe, and wanted to sell it back to India, and wanted to make India as a huge market for them. Today we are a huge market for all these Western countries. Each and every policy is connected to economic sector. Yes, they wanted to stop the technology and innovation in India. That is what the whole Macaulay, it's not about there was Brahminism and clerks and all this, English came and all that. It's not like that, because see, even there was Brahminism, even there was a class system in India. Even India was a very rich country in that time. Even in GDP, we were a very rich country, because we had that wealth. They wanted to send this wealth to Europe. They wanted to take it back to Europe and make some innovation and use the technology and sell it back to Indians. And then locals were very vocal, I guess. Because they had money, they had. Yes. So they wanted to stop the innovation, technology and manufacturing system. That is what all this Thomas Macaulay's education system. Now coming back to the present modern education, where new education policy was framed in 2019, it was drafted. What I had understood in this education policy is the ideals of equity trails in this policy. What do you say about that? See, in a larger context, the whole Indian education system is facing lots of issues, from quality to infrastructure, everything is related with the infrastructure, even quality. See, the problem with the system is, even today we don't have early education system. So new education policy is there, came in 2020. New education policy, early education system is there. See, early education system is one of the most important pillar of life of a child, of any person, okay, because majority of the brain, more than 80% of the brain develops in these ages, from 3 to 8 or 3 to 10. It's already scientifically proven. Many of the scientific papers are there, research is there, everything is there. But we are discussing this in 2020, that we have to bring early education into education policy and all this. Otherwise what we were doing, we were sending our kids to Anganwadis, and the rich were sending their kids to LKG, UKG, all these preschools. The rich had this privilege. They had this system in private institutions, but the government education system, it was not there. Majority. Now the government schools also, they are implementing it because of the policy and all. So there is a problem with all these things. So okay, anyway. Interesting that point, Thouseef sahab. Parents might have that important role in early education. Don't you agree? Because nowadays parents are least bothered about early education of a child, because they intend to join their children once they get to the age of 6 years. Let them go to first standard. Okay, it's okay, but this is connected to the previously what I discussed. Okay, I can give education to my child. The elite can give.
The rich can give, parenting and all those things. But what about the poor? They go to their job from morning 9 to 7 o'clock in the evening. They go to their job because majority of these people are poor and they work in some labor force. They cannot care about their child, right? They want to send. Who is sending the kids to Anganwadis? Yes. The rich, no, they are not the rich people. They are all these poor people. They are sending their kids to Anganwadis. So they cannot give time to these kids. That's the problem. Migrants, there are a lot of migrants. They go from one place to others. So again, it is a question of quality. Yes, yes. Sorry for the interruption. No problem. So that's what I am saying. Early education was very important, and it was very less promoted, and the very less importance was given to this early education system. Now the government is discussing this. So I am welcoming early education in new education policy. So we have seen the creation of central bodies in the education system. So central bodies such as NTA, it might be Rashtriya Shikshana Ayog or National Research Foundation. These organizations are somewhat centralizing the idea of education, and somewhat the facilities and what the student was provided is trailing a bit. Won't you agree on that part too? Yes, the whole system is centralized. See, for example, if I take one example, in Karnataka, there are many languages. So we'll provide education only in English, right? Yes. Sorry, in English or Kannada? In Kannada, we'll provide education only in English. So, for example, my mother tongue is Bari. So, in a sense, now I will say that I did not get a good education because my mother tongue was Bari, and I went to some English or Kannada medium school, whatever it may be. So what will happen? So it's like a centralized idea because the government says that majority of the population. See, there are many languages in Karnataka. There may be Tulu is the mother tongue of lakhs of people. Bari is the mother tongue of lakhs of people. Konkani is the mother tongue of lakhs of. Kodava is the mother tongue of lakhs of people. So what happened? All these kids, they go to say it's not about I am going to school now because I can understand 2 to 3 languages now. It's about a 3 to 4 year small child is going to school. So there should be a teacher who speaks his mother tongue in a school, in each and every school. There should be a teacher, or a teacher should be a bilingual teacher who knows Tulu, Kodava, Bari or Konkani or any other language, because there are a lot of Adivasis. They speak their own scriptless language. Adivasis, all these poors, all this there. So there should be a teacher in each and every school, but in our education it's not there. Okay. It's not there. Even today it's not there. The government can appoint a teacher in these early or pre-primary or primary schools, a teacher of Tulu, a teacher of Kannada speaking teacher, Bari speaking teacher, Tulu speaking teacher, or Konkani speaking teacher. What I am saying, I am not saying about the subject teacher, even the language teacher, to communicate with this child of this particular languages. Yes, totally agree. So what happens? See, that is one point, because mother tongue education should be provided in mother tongue in early ages, at least up to 5th or 7th standard, so that the students will be all the concepts will be clear in those kids. So that's why it is very important. Like mother tongue is very important. Now that you have come to mother tongue, I remember something that what happens is in our locals there are schools which are English medium and Kannada medium too, and our locals speak Bari. And what happens is these Bari children, if they go to the school and they speak Bari, and these teachers complain that you are not supposed to talk in Bari, and this complaint goes to parents. And what happens is sometimes parents might scold their children. Here what happens is even in homes, even in houses, what happens is
parents expect their children to talk in English other than the mother tongue, and I guess somewhat the No, that is not the problem. See, in these ages, students, child is very sharp at these ages, at least till 10 years. The child can learn 4 to 5 languages. That is not the problem. What I am saying is, you teach 4 to 5 languages. You can just see, if my child, he talks English because he watches these cartoons, and from there he learns English. He talks to my maid at my home. She speaks Kannada because we don't speak Kannada at home. We speak only Bari language at home, me and my wife. So he speaks to maid, and maid speaks in Kannada. So he learned Kannada. And in school, it's like a majority of these students are from Urdu background. All are speaking in Urdu. Even the teachers also, they also speak in Urdu because all the students are from marginalized community because they speak Urdu. So in society there is Urdu environment, so my child is also learning Urdu. So in this age, at least till 10 to 12, they are very fast learners of language because communication skill is very important, and in this age communication skill grows in this particular cognitive thinking, communication skill grows in that age particular age. That is not the problem. What I am saying is, the mother tongue, the language of the home, that should be very clearly taught, because student grasps everything in his mother tongue easily. He grasps it easily, very easily. He will learn lot of languages. That is not the problem. Yes. So at least those concepts should be taught in his own language. Yes. That is the discussion. That is the discussion about mother tongue education. Yes. Now coming to my point, the centralization of the agencies of the education system, such as NTA, or it might be National Research Foundation, and these foundations or these research these agencies might be against the federal structure of the Indian Union. And recently what had happened was the NEET UG, or it might be UGC NET examinations, the paper leak scam, what we recently experienced. But students are getting disturbed by these agencies are getting centralized, and these are conducting exams in a centralized way, and the local people are somewhat disturbed. What do you say about that? No, decentralization of education is very important. See, the problem with all these education system screening, there are a lot of other questions. See, when they bought this NEET, they said that NEET is a solution for medical education, entrance examination, all this. This is not the solution. Why? Because, see, we have around 1,09,048 seats, MBBS seats in India. See, how many districts we have in India? We have around 806 districts. In India we have 806 districts we have. We have around 368 government medical colleges. How many government medical colleges? Only 368 government medical colleges in India. We have 806 districts in India. See, what the government is doing? Government क्या कर रहा है? Government क्या करता है? Government जो है MBBS का intern को, 1 साल का intern को, in their 5th year, they send them to the rural area. What they say? You go and do the internship in the rural area. 1 year internship is compulsory in rural area. Why? Because government don't have doctors in rural areas. In PHCs, in rural hospitals, we don't have doctors. See, अब आपके लिए वहाँ के लिए अच्छे सिटी के लिए अच्छे MD वाला डॉक्टर चाहिए, रूरल एरिया के लिए आप इंटर्न्स भेजेंगे. क्यों भेजेंगे? आपके पास डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स जाके काम करने के लिए तैयार नहीं है. सो दैट वही बोल रहा हूँ, 806 डिस्ट्रिक्ट से 368 मेडिकल कॉलेजेस से 24 लाख स्टूडेंट्स. हाँ, अभी लिखने के लिए 1,09,048 सीट्स है. 1,09,048 सीट्स है, मे बी अराउंड 1,10,000 सीट समझ लीजिए आप, अप्रोक्सीमेटली समझ लीजिए. अभी जो प्रॉब्लम क्या है, जितना डॉक्टर चाहिए उतना डॉक्टर का सीट नहीं कर रहा है. वाई? बिकॉज गवर्नमेंट से दिस इज अ प्रोफेशनल एजुकेशन. इंजीनियरिंग एंड मेडिकल इज अ प्रोफेशनल एजुकेशन. एवरी एजुकेशन इज, फॉर एग्जाम्पल टीचिंग, इट्स अ प्रोफेशन. एवरीथिंग इज अ प्रोफेशन. सो क्या इन्होंने क्या किया,
मेडिकल और इंजीनियरिंग को लेके साइड में रख दिया, ये प्रोफेशनल है, ऐसा कर दिया कि ये है एलिट का, पैसे वालों का है, ये पैसे वालों का नौकरी है, ये पैसे वाले वहाँ जाएंगे। तो पहले इंजीनियरिंग का भी यही हालत था, फिर भी उसके बाद क्या हुआ, जितना बेचने शुरू कर दिया कि क्रेज हो गया सीट बेचने के इंजीनियरिंग का, डिमांड एंड सप्लाई रहता, देयर विल बी डिमांड एंड सप्लाई इन द सोसाइटी, सो व्हाट हैपेंड, दे प्रोड्यूस मोर इंजीनियरिंग सीट्स। उसके बाद अभी क्या हुआ, पूरा मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस खाली है, बंद हो रहा है, सीट खाली पड़ रहा है, मैकेनिकल बंद हो रहा है, सब बंद हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। सीट्स जितना है लेके बेचने शुरू कर दिए इंजीनियरिंग का प्रॉब्लम। अब मेडिकल में क्या कर दिए, उसको कम ही रख दिए, ताकि जितना कम है उतना ज़्यादा पैसा में सेल होता है, समझ गए। 58,000 समथिंग अराउंड गवर्नमेंट सीट्स है, आउट ऑफ दिस 1 लाख, बाकी सब प्राइवेट लोगों के पास, प्राइवेट कॉलेजेस है। 360 अराउंड 706 कॉलेजेस है, उसमें से 368 गवर्नमेंट कॉलेजेस है। तो ये जो देखिए, कोई भी गवर्नमेंट हो, आज़ादी का भी कितना साल हुआ, 75 ईयर्स हो गया, वी आर इन 75th year इंडिपेंडेंस। सो वी कैनॉट give medical education after all these 75 years. See, we don't have a government medical college in a district. 806 colleges में, 806 district में, अगर हर डिस्ट्रिक्ट में एक 500 सीट कैपेसिटी का एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होता, एटलीस्ट 500 सीट्स MBBS सीट्स का होता, तो वहाँ के गांव का भी बंदा आके वहाँ MBBS कर लेता। तो क्या कि आपको कल के दिन गांव में काम करने के लिए भी डॉक्टर मिलता था, गांव में काम करने के लिए भी डॉक्टर मिलता था। अभी क्या कर रहे हैं, अभी तो कॉलेज ही नहीं है, अभी तो सीट भी नहीं है, तो कैसा होगा। तो आप नीट लेके आएंगे या दूसरा एग्ज़ाम लेके आएंगे, दैट्स नॉट द सॉल्यूशन। यू हैव टू प्रोवाइड मोर, यू हैव टू प्रोड्यूस मोर सीट्स and establish more colleges, then only be the solution. And second thing is, see, this the NEET and all these examinations, see, एक सरकारी स्कूल में जो पढ़ने वाला 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट जो है, उसका लेवल एक, वो अपना गवर्नमेंट का सिस्टम के हिसाब से किताबें पढ़ता है, करिकुलम पढ़ता है। Okay, a student of 12th standard, what happens, a student of a government school, he competes with students of ICSE. No, not with ICSE or IBS, he competes with elite schools who learns in Expert, Alvas, Mahesh, all these big Akash, Allen, all these big schools. See, the fees is around 4.5 lakhs. So he learns in government even in my institution, because we may have more than 85% of the marginal community students in my institution, but 15% of the elite, because what we pay as a salary to the teachers, it's in lakhs. Yes. The government school teacher in 12th standard, he cannot compete with these kids. Correct. That is, government school cannot compete. So why are you being in this competition in 12th standard? See, if you don't have confidence in your syllabus, see, आपके स्टेट सिलेबस में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है 12th स्टैंडर्ड का, तो उसको देखिए, एक है फॉर एग्जांपल, मैं 10वीं के बाद मैं साइंस ले रहा हूँ, आफ्टर 10th आई एम ऑप्टिंग साइंस, सो आई एम ऑप्टिंग साइंस बिकॉज आई वांट टू गो टू साइंस स्ट्रीम आफ्टर 12th, राइट। ओके, अगर साइंस स्ट्रीम में ले रहा हूँ तो मेडिकल के लिए जा रहा हूँ, तो क्या मुझे उसी बुनियाद पे, उसी करिकुलम के बुनियाद पे 12th स्टैंडर्ड का आप जो है कुछ टेस्ट कीजिए, या उसी बोर्ड एग्जाम की बुनियाद पे मुझे सीट दीजिए। करेक्ट। आप बोर्ड एग्जाम की बुनियाद पे, आप बोर्ड एग्जाम फिर क्यों करते हैं आप? वही, अगर आपको क्योंकि आपके पास क्वालिटी नहीं है, तो आप यू कैनॉट कॉम्पीट। करेक्ट। आपके पास क्वालिटी नहीं है, तो आप कैसे ये स्क्रीनिंग करेंगे? यू कैनॉट डू द स्क्रीनिंग प्रोसेस आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। अगर आप सब इक्वल है तब स्क्रीन होता, सोसाइटी इक्वल है तो स्क्रीन। एक स्कूल का क्वालिटी अलग है और एक टाइप का स्कूल क्वालिटी अलग है, तो आपके एलिट लोग आ जाएंगे ना स्क्रीनिंग में। करेक्ट। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। सो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज विद दिस नीट एंड ऑल दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। अभी का जो इसी पॉलिसीज़ में NEP में सैफ्रनाइजेशन का एक पार्ट है, उसका क्या कहेंगे आप? ये सैफ्रनाइजेशन पूरा ऑल दिस, सैफ्रनाइजेशन मतलब टेक्स्ट बुक में सैफ्रनाइजेशन हो रहा है,
जो माइनॉरिटी स्कॉलर्स थे उनका जो पोएम्स, उनका जो आइडिया ऑफ एजुकेशन था वो निकाल रहे हैं। तो आपका उसमें क्या, व्हाट इज़ योर थॉट अबाउट दैट? देखिए ये तो हर गवर्नमेंट आएगा चेंज करेगा, फिर नया गवर्नमेंट आएगा फिर चेंज करेगा, पॉलिटिकल उनका आइडियोलॉजी डालने का ये सिस्टम बहुत बरसों से चल रहा है हिंदुस्तान में। द प्रॉब्लम विद द प्रेजेंट रेजिम इज दे डोंट हैव क्रेडिबल पीपल इन द टीम, दैट इज़ द प्रॉब्लम। आप किसी को लेके आ रहे, किसी उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई उसके पास उतना क्वालिटी नहीं है, बिकॉज ऑफ ही इज़ बिलोंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन, आप उनको लेके आके बिठा कमेटी में डाल रहे हैं, कमेटी में डाल रहे हैं। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। इवन व्हेन कांग्रेस वाज इन पावर, वो कम्युनिस्ट उन लोगों को भी लेके आके कमिटीज में डाल रहे थे, जस्ट वो क्रेडिबिलिटी देख रहे थे, वो सब आइडियोलॉजी नहीं देख रहे थे वो लोग। वो कम्युनिस्ट भी है तो लोग लेके आके डाल रहे थे, ओनली क्रेडिबिलिटी देख रहे थे, उसके पास क्या क्वालिटी है, वेदर इज फिट फॉर जॉब और नॉट। बट नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर ब्रिंगिंग पीपल फ्रॉम देयर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द प्रॉब्लम विद द प्रेजेंट रेजिम। सो इसलिए क्या हो रहा है, पूरा जो एजुकेशन सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, हर चीज़ पे प्रॉब्लम हो रहा है। करेक्ट। और आई डोंट नो इफ आई हैव टू टेक दिस पार्ट, तो अभी what is happening in major north Indian states, 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला जब 1960s में हुआ था, ओनली कर्नाटका एंड which one is following? Karnataka and another state is following. Even Tamil Nadu is not following. आपका ये 3 लैंग्वेज फार्मूला का क्या आइडिया है? इंग्लिश, कन्नड़ा और हिंदी, और इंग्लिश लोकल लैंग्वेज और हिंदी, हिंदी का जो उनका दबाव है, उनका इसका क्या आइडिया है आपका? बिकॉज हिंदी एक लैंग्वेज, एक नेशनल लैंग्वेज नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज मान सकते हैं, उसका क्या पार्ट है आपका? पूरा इस लैंग्वेज डिबेट है ना, वेदर इट इज़ हिंदी और सम अदर लैंग्वेज, कि आप लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, पढ़िए, कोई भी दूसरा लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, पढ़िए। फॉर एग्जांपल, बिकॉज ऑफ दिस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, वी इन कर्नाटका, तेलंगाना, इवन इन केरला, we learnt Hindi. Even today I can write Hindi, you can also write Hindi. Many Keralites also, they can write Hindi, they can read Hindi. They can write and they can read Hindi, Keralites also. Because in Kerala also, many schools, they follow this 3 language formula, and they also taught this Hindi. So that is not the problem. देखिए प्रॉब्लम क्या है, कौन सी लैंग्वेज को आप कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वो प्रॉब्लम है करके। दिस होल डिबेट, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर अमित शाह came and he said that we'll bring MBBS curriculum in Hindi. We don't have problem. He's saying we are welcoming it, but you should also bring MBBS curriculum in Kannada. You should also bring MBBS curriculum in Malayalam. We should also bring MBBS curriculum in all the regional languages. Regional languages. What will happen? We will get more research experts and scholars from this. अगर ऐसा हो गया तो बहुत आसान हो जाएगा। अपने मेरी लैंग्वेज में ही मैं अगर PhD तक पढ़ूँ तो बहुत बड़ी बात है उसमें। आप लैंग्वेज सीखिए, दूसरे लैंग्वेज, ऐसा नहीं है कि सारे नॉलेज इंग्लिश में है, वैसा नहीं है। अभी जो है इंग्लिश से ट्रांसलेट करने के लिए इनके पास लोग नहीं है, इनके पास लोग नहीं है ट्रांसलेट करने के लिए, तो बोल रहे कि अभी ये लोग ट्रोल कर रहे हैं, उन्होंने ट्रोल कर रहे, अब कैसे ट्रांसलेट करोगे? बिकॉज आपने पूरा नॉलेज सिस्टम को ख़त्म कर दिया ना। तो हमें चाहिए कि मैं अभी भी ये बोलता हूँ कि मुझे कन्नड़ा में चाहिए PhD तक एजुकेशन। कोई भी फील्ड हो, मैं कन्नड़ा में ही PhD करूँगा, कन्नड़ा में ही PhD करूँगा। मेरा साइंस का हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, मैं कन्नड़ा में PhD थीसिस लिखूँगा। करेक्ट। कन्नड़ा में PhD थीसिस लिख के मैं इंग्लिश में प्रेजेंट करूँगा दुनिया वालों को, बिकॉज आई नो इंग्लिश। उस तरह के बच्चे चाहिए हमको, 2 बाइलिंगुअल है, मल्टीलिंगुअल है, अपने लैंग्वेज में सीखे, डाइवर्स भी है। हाँ, डाइवर्स, अपने लैंग्वेज में आप सारा नॉलेज हासिल करें, और दूसरे लैंग्वेज में वो दुनिया के कोई भी लैंग्वेज में हो बात करें, जो लैंग्वेज उसको 4 से 5 लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज, 4 लैंग्वेज कोई भी सीख सकता है। वो कम्युनिकेशन का एक मेथड है, कोई भी सीख सकता है, इट इज़ वेरी इजी लैंग्वेज। तो नॉलेज हासिल करने में अपने लैंग्वेज में हासिल करें। ए मलयाली, ही गोज टू लंदन, ही स्पीक्स इन इंग्लिश, राइट? करते हैं ना, PhD करते हैं। कोई कन्नड़ा में PhD किया, कन्नड़ा का लिटरेचर में PhD किया,
कोई यूके में जाके इंग्लिश में टॉक देता है ना, क्यों? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है लैंग्वेज हर चीज़ पर, हर चीज़ पर। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिटरेचर में होगा, ये लैंग्वेज हर चीज़ में होगा, टेक्नोलॉजी में भी होगा, हर चीज़ पे होगा, साइंस में भी होगा, हर चीज़ अपने लैंग्वेज में रिसर्च कर सकता है। लैंग्वेज बस एक चैनल है, बस उतना ही है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो गवर्नमेंट का मसला क्या है, वो है हर चीज़ को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करे, दैट इज़ द प्रॉब्लम। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप क्रेडिबल लोगों को रखो, एजुकेशन इसको ही रखो, तब जो है सिस्टम ठीक हो जाएगा। तुम जब अपने लोगों को अपने आइडियोलॉजी डालने के लिए लेके आओगे तो पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स हो जाता है। टोटली करेक्ट। अभी जो कर्नाटक का जो रजीम है, गवर्नमेंट है, दे हैव abolished the NEP which was earlier government which earlier government had constituted. Why was the need of abolishing NEP and what is your idea on SEP? जो SEP का जो मेन आइडिया है, इवन स्टूडेंट्स नीड टू नो, इवन आर व्यूअर्स नीड टू नो द आइडिया ऑफ SEP. SEP में क्या है जो NEP में नहीं है? So see, it's all about politics actually. They wanted to abolish this. Okay, there was, even in NEP there are a lot of issues. There are some issues, even that communalization of education, all these things are there, everything is there. But idea, it's about it's about politics itself, even in SEP. Even अब SEP लाएंगे, SCP लाएंगे, SCP में ये सारा सिस्टम चेंज करेंगे, वो करेंगे, करेंगे, जो आप करते हैं वो हम नहीं करेंगे, 4 years को हम नहीं फॉलो करेंगे ग्रेजुएशन में। नेक्स्ट आफ्टर 5 years गवर्नमेंट चेंज होगा, फिर से पॉलिसीज चेंज होगा, ये प्रॉब्लम है। तो सी द बेसिक्स जो होता है ना क्वालिटी में, उसको ठीक करना चाहिए। हम कहते हैं कि पर्सनलाइज्ड एजुकेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल in India, according to RT, there should be around 30:1:30 is the teacher-student ratio, according to RT, right to education. Correct. Okay, 1:30. Even today, we are not following 1:30 in majority. There are many government schools that are lacking. Yes, we don't have teachers, right? But what our thought, see कि 1:30 नहीं है, 1:30 से नहीं हो सकता। मैं 30 बच्चे मेरे क्लासरूम में है अभी, एक टीचर जो है 30 बच्चे के बारे में क्या मैं जानकारी रख सकता हूँ? मुझे नाम याद रहेगा, हर बच्चे का स्किल क्या है, इसका टैलेंट क्या है, इसका स्पेशलिटी क्या है, ये किस में आगे है, हर 30 बच्चे के बारे में मैं एसेस कर सकता हूँ? इट्स नॉट पॉसिबल। 30 स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई करना, उसको एसेस करना एक टीचर को इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो what I am saying, even in many of these developed countries, European, the ideal teacher-student ratio is 1:10, 1:12. Even in this rich, elite, big schools, they have around 1:4. एक टीचर सिर्फ 4 बच्चों को पढ़ाता है। 1-to-1 अप्रोच दे सकते। हाँ, पर्सनलाइज टीचिंग में क्या होता है? पर्सनलाइज टीचिंग में क्या होता है? हर बच्चे के कमजोरी को टीचर वही कम ये करेंगे। हर बच्चे का पोटेंशियल अलग रहता है, हर बच्चे का कमजोरी अलग है, तो हर बच्चे का कमज़ोरी को वहीं ठीक करेगा, उसको इश्यूज़ को सॉल्व कर देती टीचर। तो उसको बेसिक से ठीक कर सकते हैं, 4 है, 5 है, 10 है, तो टोटली आपका क्वालिटी जो है ठीक हो जाता है। आप नहीं तो क्या करेंगे, आप वही कहेंगे कि प्रथम का रिपोर्ट आया, असर का रिपोर्ट आया, वो कह रहा है कि 5वीं क्लास के बच्चों को 2nd स्टैंडर्ड का लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता। हर साल यही रिपोर्ट लेके आ रहा, गवर्नमेंट रिपोर्ट लेकर आ रहा है, बोल रहा है कि पढ़ने नहीं आता। सोल्यूशन क्या दे रहे हैं आप? सोल्यूशन जो है, आप जो है टीचर स्टूडेंट रेशियो को कम कीजिए, पर्सनलाइज्ड टीचिंग, ये इसको इम्पोर्टेंस देना है एजुकेशन पॉलिसी में, इस तरह के चीज़ों को क्वालिटी पे, उस पर पैसा खर्च कीजिए। सो इट्स दे आर सेइंग दैट इट्स अ चैलेंज। फॉर एग्जांपल, वी कैन नॉट स्पेंड सो मच मनी इन एजुकेशन, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। वो बोल रहे, गवर्नमेंट बोल रहे, हम कहते हैं कि तुम एजुकेशन में खर्च नहीं करे तो क्या है? यही है रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग ए नेशन। ह्यूमन रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, तो आप एजुकेशन में जब स्पेंड करेंगे तो आपका ह्यूमन रिसोर्स इम्प्रूव होगा। तो ये सारे इश्यूज हैं, ये एक इशू है, इस तरह अलग बहुत इश्यूज है एजुकेशन सिस्टम। सीएम रिसेंटली एक कोट, उनका एक स्टेटमेंट आया था रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटीज़ का, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है उनका बहुत लेटर्स आ रहा है, एफिलिएशन उनका क्या बोलते हैं, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज जो आइडिया है अपने यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए,
और रिसेंटली सारे सीएम का कहना है कि सारे एप्लीकेशंस को रद्द करो और गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशन है उसमें थोड़ा ध्यान दे। मैं वो सोच रहा हूँ कि उनका वो सोच है। आपका क्या आइडिया है? क्योंकि बहुत इंस्टीट्यूशन ऐसा ही हो रहा है। रिसेंटली मैंगलोर यूनिवर्सिटी का जो इशू था, इसमें खुद मैंगलोर यूनिवर्सिटी का वीसी बोल रहे हैं कि मंगलूर में बहुत एफिलिएटेड कॉलेजेस है, अपने आप में ऑटोनोमस कॉलेजेस बन रहे हैं, जो एफिलिएशन है वो सब निकाल रहे हैं। तो वो एक एडवांटेज पार्ट है या डिसएडवांटेज पार्ट है? कि दोनों हैं। फॉर एग्जांपल उसमें अगर आप सोचें तो जब आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ठीक है, सब कुछ ठीक है, गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज का कोई ज़रूरत नहीं रहता, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास प्रॉब्लम है, आपके पास टीचर्स नहीं है, आपने प्राइवेट कॉलेजेस बना, फिर प्राइवेट कॉलेजेस को आपने एफिलिएशन ऑटोनोमस स्टेटस दे दिया, डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस दे दिया, ये है। अब गवर्नमेंट जो है जब ये सब करने से पहले अपने सिस्टम को ठीक करना चाहिए, अपने सिस्टम पे बजट खर्च करना चाहिए। खर्च करे तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक हो गए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। किसी को अपना एक यूनिवर्सिटी खोलना, अपना एक स्कूल खोलना ये नहीं है कि एक्सेप्ट दैट कमर्शियलाइजेशन, जो कमर्शियल के लिए खोल के बैठे एक अलग बात है। ओके, इवन विद गुड इंटेंशन कोई स्टार्ट भी कर रहा, कल के दिन उसको कमर्शियलाइज करता है वो, क्योंकि ये पूरा चल रहा है कि इशू है, वो सारे इश्यूज। तो गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल टुमारो माइनॉरिटी का अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी है या अपना ओन यूनिवर्सिटी है माइनॉरिटीज़ के लिए, वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ दिए, तो वो लोग कुछ चीज़ों पे जो उनको ऑटोनॉमी रहता, वो कुछ चीज़ें अपनी तरफ से कर सकते हैं, तो उस तरह से एक एडवांटेज भी है उस तरह से। लेकिन अल्टीमेटली इट विल कम टू दिस पॉइंट दैट द गवर्नमेंट शुड इम्प्रूव द यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि एक आदमी जो है पब्लिक यूनिवर्सिटी आज की पब्लिक यूनिवर्सिटी ठीक नहीं होगा, ऐसे रहेगा, फंडिंग कम करेंगे, टीचर्स नहीं होगा यूनिवर्सिटीज़ में, तो मे बी आफ्टर 10 or 15 years, maybe after 20 years, it will become like today's government schools. All these universities will turn into today's government schools, because गवर्नमेंट स्कूल का जो हालत है आज, सेम हालत हो जाएगा आपका यूनिवर्सिटी का भी, इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी वही हालत हो जाएगा। अगर आप फंड नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, तो ये हालत हो जाएगा पूरा। तो अब जो है रिच बच्चे भी जो है, एलिट क्लास के लोग भी आज कहाँ जाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, मिरांडा कॉलेज में हमको एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट एंटिटीज में ही जा रहे हैं ना सब, क्योंकि एलिट हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि वहाँ क्वालिटी है। JNU जाना है, जामिया जाना है, क्योंकि वहाँ क्वालिटी है। वहाँ आज पैसा वाला भी वहाँ उसके सीट के लिए कोशिश करता है। अगर वहाँ के सिस्टम को आप कोलैप्स करेंगे, सिस्टम खराब करेंगे, 20-25 साल बाद कौन जाएगा उधर? वो भी गवर्नमेंट स्कूल जैसा बन जाता, सब अपने बच्चों को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, तब उधर वही होता है कि अमीर आदमी भेज सकता, गरीब आदमी नहीं भेज, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा गरीब आदमी को, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भेजेगा। तो ये प्रॉब्लम करेक्ट है। और आपने जो कमर्शियलाइजेशन का टच किए थे, क्या हो रहा है कि एजुकेशन, इवन एट प्राइमरी एजुकेशन जो है, बच्चों का फीस बहुत हाइक किया जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस तो 1 लाख में LKG का सीट आ रहा है। तो कमर्शियलाइजेशन का जो आइडिया है कितना डिटोरिएटिंग है, आपका इसका थॉट्स क्या है इसके ऊपर? देखिए, एजुकेशन इज ऑलवेज सर्विस सेक्टर में है, वो कमर्शियलाइज नहीं। इवन क्या होता है, एजुकेशन जब शुरू करता है आदमी, तो उसका सस्टेनेबल के लिए जो अमाउंट चाहिए उतना रखना चाहिए, सस्टेनेबल, क्योंकि इट शुड सस्टेन, द इंडस्ट्री शुड सस्टेन। कि तुम कम प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है अब आज जो है, एक तो गवर्नमेंट स्कूल है, बिल्कुल क्वालिटी नहीं है, ख़त्म हो गया। दूसरा कौन सा है? प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट है। और एक प्राइवेट में क्या है, प्राइवेट का 2 टाइप का प्राइवेट स्कूल्स है, एडेड और नहीं, एडेड नहीं है, जिसमें क्वालिटी नहीं है। छोटा मोटा गली में स्कूल ओपन कर दिया, टीचर 10,000 5,000 का सैलरी रख रहा है, क्वालिटी नहीं दे रहा है, स्कूल चला रहा है। ओके, माइनॉरिटीज़ में, सारे मार्जिनल कम्युनिटीज़ में, प्राइवेट में ही बोल रहा हूँ, गलियों में स्कूल ओपन कर रहा है, छोटा मोटा ओपन कर रहा है, लेकिन क्वालिटी नहीं दे पा रहा है, बिकॉज उसके पास पैसा नहीं है, वो कम फीस भी लेता है, चैरिटी चलाता है, वो चलाता है, कलेक्शन करता है, वो कर। और तीसरा जो है वो एलिट रिच स्कूल्स, उसमें सिर्फ अमीर ही जा सकता है। आप जैसा बोले 1 लाख 2 लाख फीस दे के नर्सरी में एडमिशन जो पैसा वाला ही ले सकते, वो है। यहाँ 5,000 का नर्सरी में जो जाने वाला, LKG में जाने वाला जो है,
उसको भी प्रॉब्लम है, उसको स्कूल में क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं, फिर भी जो है वो प्राइवेट स्कूल भेज रहे हैं, तो उस तरह का भी प्रॉब्लम है। इसीलिए एटलीस्ट सस्टेनेबिलिटी के लिए जो चाहिए उतना फीस लेके अच्छे क्वालिटी एजुकेशन देना है, अगर प्राइवेट भी है। कमर्शियलाइज दो एलिट रिच स्कूल्स का फीस एवरी ईयर गवर्नमेंट इट रिलीजेस एन ऑर्डर फॉर दिस फी रेगुलेशन एंड ऑल, बट नो वन फॉलोज इट। गवर्नमेंट के पास अभी भी रेगुलेशन है, फीस इतना लेना है, पिछली बार का 75% वो ये सब है, उसमें ऑलरेडी सर्कुलर पुराना, इवन इन कर्नाटका गवर्नमेंट भी दे सेंड सर्कुलर। इंस्पेक्ट करते हैं क्या नहीं नहीं, कोई इंस्पेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं होता उसमें, सर्कुलर भेजते हैं, सब अपने इसमें फीस लेते हैं, ये प्रॉब्लम मनमानी है, चलता है। रिसेंटली DK शिवर वो आर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उनका भी एक कमेंट था कि, उनका एक स्टेटमेंट था कि जो कंपनीज जो MNCs है या PSUs जो है, उनका जो CSR फंड्स रहता है ना, वो CSR फंड्स गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेजेस का डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना है। तो आपका इसका आइडिया क्या है? बिकॉज आई विल बी आस्किंग अ क्वेश्चन लेटर ऑन रिगार्डिंग द सेम। देखिए CSR में पैसा, अब CSR इसीलिए लाया गया है कि आप सोसाइटी पे खर्च करना, सोशल सेक्टर पे खर्च कीजिए, आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे ये होता है हर कंपनी को। लेकिन क्या हो रहा है CSR में हो रहा क्या है? CSR जो पैसा दे रहा है अपने के हिसाब से एक स्कूल ओपन कर दिया, वो एक ये कर दिया, अपने नाम से कर दिया, फाउंडेशन कर दिया, तो वहीं से वो जो है कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा है, कुछ सोशल सर्विस कर रहा है, वहीं पर खर्च कर रहा हूँ बोल के CSR से कर, तो उसी कुछ लोग स्कूल्स को भी देते हैं, कुछ लोग इसको भी देते हैं। तो पूरा जो CSR का ये है रेगुलेशन से वो अमेंड होना चाहिए मेरे हिसाब से। अमेंड होके ये होना चाहिए कि CSR मनी शुड बी स्पेंट ओनली ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। वो भी कौन सा हेल्थ एंड एजुकेशन? पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट के हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर में CSR का पैसा यूज़ करो। तुम अपने हिसाब से कुछ NGO बना दिया, वो बना दिया, हर आदमी NGO, रिलायंस फाउंडेशन, SCL फाउंडेशन, अदानी फाउंडेशन, अपने नाम से NGO बना के हम CSR उधर डाल रहे हैं, उस पर खर्च कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहा है कि पैसा उनका है, वो CSR पॉलिसी की वजह से वो डाल रहा है पैसा उधर। वैसा नहीं है, आप जो पैसा है CSR का अमाउंट, स्पेंड इट ऑन पब्लिक एजुकेशन, स्पेंड इट ऑन गवर्नमेंट स्कूल, स्पेंड इट ऑन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। इस तरह का एक रेगुलेशन होना चाहिए। रूल्स जो है, रूल्स को फिर से अमेंड करना चाहिए। देयर शुड बी एन अमेंडमेंट इन द rules and regulations of this CSR policy, that they should spend it only on government schools and government education, government universities and government hospitals, health sector पे और education government पे spend करना है। अपने मनमानी किसी को दिया, उसको दिया, फिर बाद में खर्च किया, ऐसा नहीं। CSR का उस तरह से हो गया तो क्या है, ये जो सिद्धरामैया बोल रहा है या DK शिव कुमार बोल रहा है, उसके हिसाब से ये डेवलप हो जाता है। दबाव हो सकता है इन जो लीडर्स बोलते हैं। नहीं, वो पॉलिसी में क्या है, वो कहीं पे भी स्पेंड कर सकते हैं ना। वो लोग जाके रिक्वेस्ट करे तो कुछ फंड तो देंगे, बट वो टेम्पररी अरेंजमेंट है। करेक्ट। वी शुड गिव परमानेंट सॉल्यूशंस दैट कंपल्सरीली यू हैव टू स्पेंड द CSR अमाउंट ऑन गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम एंड गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर। करेक्ट। अगर उस तरह का कंपल्शन आ गया तो डेवलप होगा। When there is no compulsion, sometimes they give, sometimes they do not give. Correct. What will you do tomorrow if they do not give? What will you do? Listen, that you will say again, we don't have money, we don't have budget. I'll quote from a famous educationist, William Arthur Ward. He says that a mediocre teacher tells, a good teacher explains, the superior teacher demonstrates, a great teacher inspires. यहाँ जो है रोल ऑफ टीचर्स का जो आइडिया है वो दिखाया गया है। अभी का जो सिस्टम है, टीचर्स का जो पार्ट है एजुकेशन सिस्टम में या बच्चों की परवरिश में, वो हाउ इज इट डिक्लाइनिंग एंड हाउ इज इट पुशिंग चिल्ड्रंस टू टच हायर हाइट्स? सी, एक टीचर जो है, फॉर एग्जांपल मेरे हिसाब से एक टीचर जो है, टीचर शुड बी अ लर्नर। करेक्ट। टीचिंग जब करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे स्कूल में मैं बताऊं कि टीचर को ये बोल रहा हूँ कि टीचर जो सिखाते हैं साथ में टीचर भी करना है। फॉर एग्जांपल क्लासरूम में टीचर भी एक प्रोजेक्ट कर रहा है, टीचर बोल रहा है कि बच्चों के ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं ये कर रहा हूँ, बच्चे भी देख रहे हैं, टीचर भी कर रहे हैं टीचर का प्रोजेक्ट, बच्चे भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, टीचर भी कर रहे हैं, तो क्लासरूम का ये माहौल कैसा होगा?
बच्चे भी, मेरा टीचर भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, टीचर का प्रोजेक्ट ऐसा है, टीचर भी बच्चों के साथ सीख रहे हैं, उस तरह का माहौल हो गया है तो पूरा टीचिंग सिस्टम डेवलप होता है। बच्चे भी बच्चे का ये भी डेवलप होगा, बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं, पूरा इंटरेस्ट से इन्वॉल्व होकर पढ़ते हैं। तो हमारे पास हिंदुस्तान में टीचर का पहले तो द डिग्री व्हाट दे गिविंग बीएड, उसमें क्वालिटी नहीं है। कोई बैठ रहा है दिल्ली में और कर्नाटक से बीएड का ये ले रहा है, बच्चे सर्टिफिकेट ले रहा है बैठ के डिस्टेंस में, उसको मालूम ही नहीं कि बच्चों का साइकोलॉजी का हिसाब से पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज वो कुछ भी नहीं मिलेगा उसको। कहीं से बीएड लेके आ गया, डिग्री लिया, ये लिया, मैं टीचर बन गया, तो ऐसा इट्स नॉट पॉसिबल। सी व्हाट आई एम सेइंग, इवन इन हाई स्कूल फॉर एग्जांपल, अगर एक क्लासरूम में 4 साइंस का टीचर है, 8th या 9th स्टैंडर्ड के लिए 4 साइंस, तो 4 साइंस के टीचर्स रिसर्च करना चाहिए कि इनोवेटिव मेथड क्या हो सकता है साइंस पढ़ाने में, मैथ्स पढ़ाने में। तो चारों के अलग अलग रिसर्च करके चारों पे अपना कॉन्सेप्ट जब शेयर करेंगे तो वहाँ पे ग्रोथ होगा, 4 टीचर्स का ग्रोथ होगा। तो ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट रिसर्च एंड इनोवेशन जो है इसमें वो कंपलसरी रहना है टीचिंग में, इसमें भी, तब क्या है डेवलप होगा, टीचर्स डेवलप होते हैं। ये सारा ओवरऑल टोटली जो है टीचिंग में इस तरह का इश्यूज है, ये सब जब होगा तो एक स्कूल जो है अल्टीमेटली सही से फंक्शन होगा। ओके, कंक्लूडिंग आवर पॉडकास्ट, इसका ये जो पॉडकास्ट आइडिया है, इसका असल मकसद है कि जनरल पब्लिक को एक अवेयरनेस हो जाए कि एजुकेशन सिस्टम में क्या हो रहा है, आपका रोल क्या है जब भी एक पॉलिसीज़ बनाया जाती है, जब भी स्कीम्स बनाई जाती है। आप if at all it has flaws, you have to raise questions on it, you have to raise ideas on it. मतलब क्या होता है कि जनरल पब्लिक जितना अनअवेयर है उतना ही स्कीम्स उसके अगेंस्ट बन सकता है। Won't you agree on that part? The people, they talk very less about education, even in many sectors. Okay, for example, academia, all these things, these people they talk, but क्या एजुकेशन ग्राउंड लेवल पे सब लोग बात करते हैं एजुकेशन के बारे में, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे डोंट नो अबाउट दिस ऑल दिस स्कीम्स, ऑल दिस इश्यूज विद एजुकेशन एंड ऑल, दे डोंट टॉक अबाउट इट। सो व्हेन यू टेक दिस डिस्कशन टू द लास्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी, आखिरी आदमी तक लेके, लेमैन तक लेके जाएंगे, व्हेन यू टेक इट टू द लेमैन, तो ग्राउंड लेवल पे जब डिस्कस होगा, सोसाइटी का कट्टे मोहल्ले में जब डिस्कस होगा, तो अल्टीमेटली वो सिस्टम विल डेवलप। So I totally agree on that part. Thank you, Thouseef Saab, for enlightening our viewers about this whole concept of education system, and we once again thank you for giving this opportunity. Thank you for watching our podcast. Stay tuned.